Hi everyone and welcome to Paripurna Batch daily MCQ session to the StudyIQ YouTube platform. Good evening everyone, and this is Monday. The Monday to Saturday पूरा आमर MCQ session चलता है 7 PM रे, जेहेतु आज गोटे छोटो आमर नोटिफिकेशन थिला बोली 7 PM रे स्टार्ट करी हेलानी. And now I am starting Geography 4 MCQ current affair base रहइबो आपनकर सब जाको. गुड इवनिंग एवरीवन, जॉइन फास्ट समस्त को जॉइन करे पे कहि दियो सो दैट हम सेशन को आगो को नेकी जिबा. फास्ट जॉइन करो समस्ते. ओके, तो आज हम सेशन स्टार्ट करिबा. शेयर कर देंतु समस्ते टिके ना. चलो फिर तो सेशन को स्टार्ट करिबा. किछि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी रो जोड़ा टिके टफ रहिबो बट मजा आसीबो. चलो फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू ऑन द स्क्रीन. India is concerned about the potential impact of Chinese mega dam being built Tibet on a shaft river. Which of the following statement is correct? Good evening everyone. Good evening Rajendra, Afrin, Satrujit. चलो फिर हाँ, गुड इवनिंग समस्त को बहुत बढ़िया. कौन एटा मु कहीं जानी पानु के जन अच्छो. हाँ चलो ए देखो ताले आंसर को देखिबा. आंसर कोन हबो? ए कहूची शत्रु कहूची ए, दैट मींस ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट. एंड अफ्रीन कहूची ए. गुड इवनिंग सुनीता, अफ्रीन. ताले देखिबा से कहूची चाइनीज डैम कुड रिड्यूस द ड्राई सीजन वाटर फ्लो इनटू द इंडिया ब्रह्मपुत्र बाय 85% इज करेक्ट. In response to India is fast tracking the construction and own upper streams. Siang multi-purpose storage dam, this is also correct. The proposal dams has widespread support among the local communities in Arunachal Pradesh. Na loko mane oppose karuchi. How these people will support? The peoples are opposing. अर्थात यदि आम देखा the peoples are now started protesting against this. The लोक माने they are what? They are protesting. This is not support. The peoples are what? The protesting. The peoples is protesting against them, and that is why it would be 1 and 2. So बहुत easy questions right. Good evening Sonita. Sonita right. तो ये हो समस्ते इजी क्वेश्चंस देखिदेले आमे आराम से सॉल्व करि परिबो. ब्रह्मपुत्र ऊपर तो इंडिया कोन करूची? सियाक मल्टी प्रपोज स्टोरेज डैम चाइना करूची. तो या को आमे देखिदेले. गुड इवनिंग टू ऑल. Here is the answer explanation आमे देखिदेले. Now we will comes to question number 2.
Now we will comes to question number 2. Question number 2. Cloud seeding has been in news in India as the May month 2025. Which of the following is true regarding the deployment? It is being used in Rajasthan to induce the rainfall during the drought. It is universally accepted as an effective and risk-free solution. It involves widespread of substance like silver iodides into cloud. Both A and C. The answer को है 2 नंबर जदि आम कह डी कौन शत्रुजित आफरीन 2 आफरीन सी सस्मिता डी देख यार जदि आंसर सॉल्यूशन तुमने देखिबो ना यार जो सॉल्यूशन पार्ट को जीव जस्ट इमेजिन कर दुबई कथा दुबई रे जेतले हमर कोठी कोठी क्लाउड सीडिंग हुए हमर साधारणतः राजस्थान एंड विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक तो जदि तुमको पचार इंडिया रे कोठी 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 हुए राजस्थान कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ये सब रीजन रे हमर क्लाउड सीडिंग हेई थाए बिकॉज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया नाउ दिस इज से कहूची दिस इज इफेक्टिव एंड रिस्क फ्री ना ये कथा हेइथिला केबे जदि तमे जानिबो दिस इज व्हाट दुबई कथा नहीं जाओ जो दुबई रे फ्लड हेइथिला बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग आउ क्लाउड सीडिंग जोठी करा जे आखपाख एरिया रे वर्षा हबो नाही आखपाख एरिया रे कोन हबो वर्षा हबो नाही राइट तो आखपाख एरिया रे कोन हबो वर्षा हबो नाही दैट इज व्हाई वेरी इंपोर्टेंट लेट्स से एटा होची तमर इंडिया मैप जदि आमे एठी क्लाउड सीडिंग करदेले ताले ये आखपाख एरिया रे वर्षा हबो नहीं तो आर गोटे नेगेटिव इंपैक्ट मध्य रही सो दैट इज व्हाई ताले एथरे आमे कोन यूज करू सिल्वर एंड पोटासियम आयोडाइड को यूज करा छे कोन करो सिल्वर एंड पोटासियम आयोडाइड को यूज कर काई बिकॉज़ दैट इज हैविंग एफिनिटी टू द वाटर ड्रॉपलेट्स ता चारि पटे कोन हिजबो दैट विल एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली तो ये जे तमरो सिल्वर आयोडाइड दैट विल एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली so that the moisture available in the atmosphere that will bind and that will have the what platform to condense reason मु कहली ना काई की यूज करा जाए because ये जो silver iodine and potassium iodines they are having affinity to the water तार meaning हैला कि जेते बळे आमे silver iodide को एगुडा कोन माइक्रोस्कोपिक गुडा पूरा जेते आमे ताकू स्प्रे कर दउ एटमॉस्फेयर रे जेते मॉइस्चर अछि अपने आप से आंको पाखु को पळे आसीबो सो दैट कोन हिजबो ता चारि पटे बुंदा बांदी हिजबो बा आमे जाकू कहूचे व्हाट सैचुरेटेड हिजबो देन दैट विल कॉज रेन एबे बुझा पड़िबो राइट दिस मेकानिज्म बुझा पड़ी जो एबे करेक्ट वर्षा न होबार रीजन कोन लीवार्ड इफेक्ट हेई पारे abnormal monsoon हेई पारे मॉनसूनल व्हाट आमे को ब्रेक हेई पारे किछि भी पर वर्षा न होबर रीजन ठीक अछि नाउ वी विल कम टू थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज क्लाइमेट whiplash आने आजकल बहुत न्यूज रे चल छी क्लाइमेट whiplash काली डिस्कस करथले तो राइट आंसर इज व्हाट 3 नंबर बी काली हम डिस्कस करथले एटा ये साधारणतः आजिकली क्लाइमेट whiplash कोठी अधिक देखा जाउची द सिटीज एरिया रे कोठी अधिक देखा होची इन द सिटीज एरियाज लाइक साउथ ईस्ट एशियन सिटीज द अर्बन स्पेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसिंग दिस वन द क्लाइमेट whiplash अर्थात सडनली वर्षा हबो फ्लड हे जो तापर पुनी ड्राई सीजन
abnormal type of condition, right? तो ये तुमको एठी देखा जीवो, एडा बुझा पड़ जीवो समस्त को। ओसिलिएशन अर्थात कोन माने सडनली बहुत सारा वर्षा हो जीवो तापर पुनी ड्राई सीजन किछि दिन परे। ओके डन। चलो फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। The Bharat forecast system launched in May 2025 is known for what key feature? It's known for what key feature? Question number 4. Fourth number question. काली डिस्कस करथिले हमें सुनीता, राजेंद्र, सोनीता, शत्रुजीत, समीर, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया। तो मु कहितली ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स रे आसीबार पोटेंशियल बहुत ही अधिक। हाँ राइट। So this would be 6 kilometer correct. IITMs, IIT of Madras, monsoon, cyclone, ये सबू। So all of the above. That means आम कहबा तो आंसर एटा मु सेदिन तुमको कहितली भारत फोरकास्ट सिस्टम। दैट मीन्स आम कहबा व्हाट स्वदेशीकरण बा जाको कहचे इंडिजिनेशंस ऑफ एवरीथिंग। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू व्हाट। प्रीत also there. Good evening Preet. The government is having target by 2047 everything will be like a self-satisfied country, and that is why we are having this Bharat forecasting system which will have high resolution operating that means approximately 6 kilometer of resolution. It will be developed by what Ministry of Earth Science by IITM, designated accurately forecast monsoon, cyclones and extreme weather. So all of the above. So this is applied based questions. The question is what? Applied based question. And the D. So as of now jodi hum dekhba, the Bharat forecasting system is high resolution weather forecasting 6 kilometer grid engineered by Indian Institutes of Tropical Meteorology, sorry mate pardon kar diyo, under the Ministry of Earth Science to improve the prediction of extreme weather. Ministry of Earth Science. Now question comes to fifth number question. Question number 5th. According to the recent research, how is the onset of Indian monsoon revised from traditional understanding? Okay, बहुत बढ़िया. Thank you everyone for joining the session. Let's continue the session as usual, and this session is got so much of affection from your side. Question number 5. फाइव जदि हम देखा बी कहूँ कि बी इज आफरीन, शत्रु इज बी, प्रीत इज बी, and Sasmita is B. Sonita also going for the B. According to the recent, that means what? अच्छा technique पोके दे जो it's now appear to a state starts in November India and propagation that is what? North and west. Okay. That means now its appear starts in northeast India. जोटा से कहूँ छे. Okay, बहुत बढ़िया. Right. अच्छा मते को okay. Point of inaccessibility in news. Point Nemo कथा कहूँ कि you are talking about point Nemo. Okay. Yes. So answer would be also B. That means जदि हमें कहबा तो ये कौन होची एटा जो तमरा ट्रेडिशनली रिवाइज ट्रेडिशन जोटा अंडरस्टैंडिंग करिया पे आमे कौन करछु वर्तमान नाउ अपियर्स इन स्टार्ट्स नॉर्थ ईस्ट जोटा होइथा हमर नॉर्थ ईस्ट मानसून होइथा एंड प्रोपागेट नॉर्थ एंड वेस्ट को केमती प्रोपागेट करछु.
एटा को एक्सप्लेन करिबा ओके ठीक अछि चलो देखो साधारणतः मानसून को केमती प्रेडिक्ट करा जाए प्रथम कथा जानो कि ट्रेडिशनली राइट से कहि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च हाउ ऑनसेट ऑफ मानसून इज रिवाइज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग देखो मानसून को जेतला में फोरकास्ट करू केमिति करि थाउ मानसून को फोरकास्ट करिया पई हेले साधारणतः अक्टोबर इन द मंथ ऑफ अक्टोबर टू नवंबर मंथ एंड टू एन एक्सटेंट जनवरी रे ही प्रेडिक्शन हे जिवो तमरो मानसून केमिति हबो तमे को केमिति बिकॉज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी से ईयर टा एलिनो ईयर हबो कि नाही जणा पड़चिवो whether the year would be La Nina or El Nino that would be identified in the month of what December and January so that IMD forecast करिवा स्टार्ट कर देबे सेबेठु राइट एट हला तमरो गोटिए पार्ट फोरकास्टिंग रो ना सेकंड पार्ट हला कोन कि ये तो एलिनो लालिना जणा पड़ जिवो तुमको सर केमिति बिकॉज़ बाबा डिसेंबर 25 कोन चाइल्ड बार्थ ऑफ चाइल्ड क्राइस्ट बर्थ मन क्रिसमस आसीबो एक कथा समस्त जानछ मु कहितली तो सेटा गोटे पार्ट हेगला तमरो प्रेडिक्शन रो सेकंड प्रेडिक्शन केमिति मानसून करा जाए एसएसटी अर्थात सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन कहार तमरो इंडियन ओशन रो सी सरफेस टेम्परेचर को मेजर करा जाए कि सी सरफेस टेम्परेचर बस ताकू कहा जाए स्किन ऑफ द ओशन कि तार टेम्परेचर केते अछि डेप्थ केते अछि ताकू नहीं कि हमें कोन गोटे प्रेडिक्शन करा जाए दिस इज द सेकंड वे टू प्रेडिक्ट द मानसून ठीक अछि देन सर्कुलेशन देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कोठी इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देन दे विल हैव व्हाट जो शत्रुजीत जोटा पचार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दे विल आल्सो गो फॉर व्हाट आमे कहबा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बा हाई आमे कहबा प्रेशर हमर जो इंडिया रही छी ना इंडिया रो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे कोन प्रेशर सिस्टम रही छी ये पार्ट रो प्रेशर को मध्य चेक करा जाए ये सब ट्रेडिशनली थिला वर्तमान ए माने कोन कहउचंती कि हमर जेतरे रिट्रीटिंग मानसून आसुची तो रिट्रीटिंग मानसून को भी गोटे सेथरे ऐड कर देले नाउ रिट्रीटिंग मानसून विल बी आल्सो कैलकुलेटेड कि हाउ कि जदि रिट्रीटिंग मानसून ए वर्ष एतिकी हैला तले मानसून नेक्स्ट टाइम केते हबो तो ए जो फंडाटा को से माने ऐड करले ठीक अछि नेक्स्ट आई विल कम टू दिस सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 6 थैंक यू एवरीवन चलो नेक्स्ट देखो according to 2025 report by the Centers for the Science and Environment which of the following statements are true about the India's environmental and development trends ये सब अपडेट तुम मन को टेलीग्राम चैनल रे मिल जबो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ओएस मेंटर you can join my telegram channel OS mentor तुमने join करि परिबो so that you can have other updates वगैरह तुमको जहाँ दरकार एग्जाम रिलेटेड all the updates you will have this है ना OS mentor join it and have the all details plus current affair वगैरह तुम को मिल जबो चले चल आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 6 Question number 6. प्रीत कौची कौन कौच तमे कौन प्रीत व्हाट यू आर सेइंग किछि पचारछ कि मते ओके if you are asking something then you can ask me right according to the report 2025 Centers for the Science and Environment which of the following statements are true about the India's environmental and development trends the year 2024 was the India's warmest years on record एलिनो मुडु की कौन पचारुच कि मते ना कौन यदि के पचारुच को देन आई विल एक्सप्लेन इट
एलिनो मुडुकी कहबी अच्छा हो ठीक अच्छे ए क्वेश्चन पर कहीदेवी ओके एते डेस्परेट ओके कहीदेवा कहीं हाँ पेशेंस डोंट वरी है ना कहाँ जा रहे हम कोई कोई नहीं ओके एटा तो गोटे कथा ना कौन करदेवा कौन अच्छे ओके देख yes it was warmest the extreme weather events occurs 88% yes that was also correct because Kerala flood because of what Kerala flood because of Uttarakhand quarry Uttarakhand landslides all that took place the event displaced 5 million people especially in Assam and this is very important flood Assam flood last year what Assam flood Kaziranga इवन बहुत सारा तुमको देखो वाइल्ड लाइफ डेथ होता इन द काजीरंगा नेशनल पार्क्स है ना ये हो पार तो प्रीत कौच 6 नंबर डी आफरीन कौच डी ऑल करेक्ट्स ओके देखिए आम तुम कौन हो आंसर समस्ते कह यस डी इज द आंसर ताल कि कौन हम तुम डी इज द आंसर डी इज द आंसर ना जोटा कहला एलिनो मुडुकी कौन एबे एलिनो मुडुकी टिके आसीबा तुम मानकर डाउट थिला कार डाउट अच्छी एलिनो मुडुकी मुझे कहीदे एलिनो मुडुकी कौन देख फास्ट कथा लेट्स से दिस इज योर साउथ अमेरिका कोस्ट दिस वन इज योर ऑस्ट्रेलिया राइट एलिनो मुडुकी अर्थात कौन ध्यान से सुनबो इफ वार्म वाटर इज हियर देन इट वुड बी लालिना इफ warm water is here it would be lalina if warm water will be here then it would be elino if warm water would be here ताहाले हमें ताकू कहिबा एलिनो मुडुकी कोन कहिबा एटा हला कोन तमर पैसिफिक ओशन दिस इज व्हाट पैसिफिक ओशन ताले जदी पैसिफिक ओशन रो वेस्ट रहिला वार्म वाटर एटा लो प्रेशर अर्थात व्हाट वार्म वाटर if warm water will be here then it would be elino sorry lalina if warm water would be here it would be elino if warm water would be here this would be elino muduki अर्थात कौन मिडिल and if here would be warm water then both side will have high pressure and high pressure middle will be low pressure there would be there would be what two shell that is why muduki so lalina muduki कौन जदि lalina muduki भी सेमती लालिना कौन अर्थात जदि तुमरो एठी कोल्ड वाटर रहिला इफ दिस वुड बी हियर ध्यान से देखो लालिना मींस व्हाट ताले एटा हम देखिले ताले एई जो तुमरो वार्म वाटर टा एलिना मुडुकी देखिले सेमते में लालिना मुडुकी देखिबा कोन दी पटो साइड रे कोन हिजबो तुमरो लो प्रेशर मझरे हिजबो हाई प्रेशर ताले जदि एठी हाई प्रेशर हे गेला एपटे लो प्रेशर हे गेला ताले सेटा कोन कहबा लालिना मुडुकी नाइसे देखिबा स्पंदन कहूँ सार मु पर देखी दिए चलो एबे बुझा पड़ला ना किसी आउ किसी डाउट अच्छी कह जदि न बुझा पड़ी फिर भी बुझाईदेवी किसी ना मु कहली जदि पैसिफिक ओशन रो लेट से ये तुमको देखागला ऑस्ट्रेलिया एपटे रहिला if low pressure is here and middle is your high pressure then this would be your lalina muduki this would be what हम कहबा lalina muduki आउ जदि एठी लो प्रेशर हे गेला ताले दी पटो साइड रे तमर कोन हे जिवो हाई प्रेशर that would be what हम कहबा elino muduki that would be what elino muduki so this is how you have to remember ताले मिडिल रे जदि हे गेला ताले आसीबो हैला ताले एलिनो लालिनो बुझी परिबो समस्ते clear everyone चलो फिर next at the international conference of that is what Dushanbe May June 2025 which of the following were highlighted by the Indian measure to combat the glacier retreat देखो मुडुकी अर्थात मिडिल यदि तुमको कह लालिना मुडुकी लालिना
आउ जदि एलिनो कहला ताले लो प्रेशर टा सेंटर रे जाइबो आ जे लालिना कहला ताले सेंटर रहइबो हाई प्रेशर दैट वुड बी देयर चले क्लियर एवरीवन चलो फिर नेक्स्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दुसान बे देखो सेटा कांसेप्ट जोटा मु बुझेली सेटा बुझा पड़ला समस्त ना काकू डाउट अछि जदी को बुझा बुझा पड़िबो एलिनो लालिना मुडुकी प्रथम आगे एलिनो न बुझी पड़ले मुडुकी कोड बुझिबो जे मु कहली ना एलिनो अर्थात मझिरे वार्म वाटर पैसिफिक ओशन रे एपटे रहला ऑस्ट्रेलिया एपटे रहबो साउथ अमेरिका मझिरे जदी वार्म वाटर रहिला तले ठेला एलिनो मुडुकी मझिरे जदी कोल्ड वाटर रहिला तले हबो लालिना मुडुकी जदी मझिरे कोल्ड वाटर रहबो दी पट साइड रे वार्म वाटर रहबो आउ जदी मझिरे वार्म रहबो दी पट साइड रे कोल्ड रहबो बस हे गेला तो एटा हाई प्रेशर लो प्रेशर एला एलिनो एला लालिना concept all are correct देखिबा में the launch of international year of the glacial preservations ये तमर एठी हितला करेक्ट अछि देखिबा करेक्ट नथिबो बोते आंसर तमरो ए ओनली तो जो इंडिया अंडरलाइंस दैट इज हम कहबा जोटा कि दानुब से हितले इनिशिएटिव्स एंड न्यू सेंटर्स फॉर द व्हाट क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेटिक चेंज स्टडीज एट एड्रेस the year though the year was indeed declared as the international year of glaciers that was at UN declaration not launched by India एटी से कहूची not launched by India जोटा से कहूची इंडिया किंतु ताको कर नथला तो इंडिया दैट मींस हमें कहबा नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हिमालयस जोटा हमें कहूचा एटा बहुत इंपोर्टेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए किए दे बाबा जस्ट अ मिनट ओके सो दैट वुड बी देयर इंडिया को लॉन्च करने एठी लिखे ने लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल ग्लेशियर ना इंडिया को लॉन्च करने बट एटा लाइन से अच्छे चलो फिर नेक्स्ट आसीबा हम 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट चेंज इन ग्लेशियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश न्यूज रे थिला ये बहुत बढ़िया गोटे न्यूज रे थिला तो अरुणाचल प्रदेश रे तमे देखो एठी ऑप्शन होईची 1 ओनली करेक्ट 2 ओनली करेक्ट बोथ आर करेक्ट नीदर नॉर नाउ देखा सी हाँ कौन है एक मिनट एक हाँ भूली गली हाँ तो आंसर दे दिल बोथ आर करेक्ट चलो फिर यस बोथ आर करेक्ट ओके नेक्स्ट आसवा में 9 नंबर क्वेश्चन which of the following statements are true regarding the two well-known glaciers in the Himalayan region that is the what Drang Droops
ग्लेशियर लद्दाख एंड येला ग्लेशियर नेपाल. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूज रे थिला. ये येला ग्लेशियर ये नेपाल रे थिला, ये खत्म हो जाइछि वर्तमान. येला ग्लेशियर वाज दैट इज व्हाट कमेंट्स एज अ डेड. ए डेड हो जाइछि सेति पे न्यूज रे अछि. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. अगेन आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. देख ये सब क्वेश्चन करने भल लगे मुझे जानी डिफिकल्ट लगे तुम मानक ना लगे कि यार ये सब क्वेश्चन कुआड़ आनुंट एत डिफिकल्ट क्वेश्चन बट एगुड़ा ही भल. अरुणाचल प्रदेश रे जदि आम देखा जो 110 ग्लेशियर्स बिटवीन ये खत्म हो जाइए चेंज जो भानिश आपको जिते क्लाइमेट चेंज आस डेटा लिखि दियो मेन्स आंसर रे. तमें भावनी कि दिस क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग फॉर द प्रीलिम्स. ना ना, यू आर सॉल्विंग फॉर द मेन्स एज वेल. ये जो 110 ग्लेशियर दैट इज vanished from the Arunachal Pradesh from 1988 to 2020, only this हमें कहते हैं 12 and this 20, that means 32 years रे 110 ग्लेशियर खत्म. you can add it what means. चले, this is very important. अरे ये तो आंसर देखिए देली. ये तो येला ग्लेशियर कहली ना, दिस इज नेपाल रो ग्लेशियर ये खत्म हो जाइए सेति न्यूज रे अछि. And Drang, that is Drangdung Glacier receding at approximately 1 kilometer per year. ये भी both are correct. तो देखो एक climate change रो सबू तुमको questions मिल गया. Now comes to the oceanography. Now I will have questions from oceanography. Test yourself. Sir, justified for prelims. Okay, thank you. प्रिलिम्स देख खाली प्रिलिम्स एंगल रे बिल्कुल भी भावनी. मु बारंबार कहि डोंट थिंक अबाउट द प्रिलिम्स बिकॉज दिस डेटा एंड फैक्ट्स विल बी ऐड इनटू द मेंस. बारंबार कहूँ भाई क्लाइमेट चेंज आसले सब डेटा लिखिपर जोटा येला कथा कहली. जदि तुमको पचार जो क्लाइमेट चेंज होगा द्वारा कौ ग्लेशियर भी खत्म हो पचार येला ग्लेशियर से कौन कर. जदि न भी आसला क्लाइमेट चेंज एग्जांपल मु लिखी. सो दैट इज अ डुअल सोर्ड फॉर मी. इधर मु प्रिलिम्स लिखे और मेंस रे लिखी तो पारिबी. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देख जोटा बिटर ट्रूथ क्या भल लगे. इजी क्वेश्चन हमको भल लगे. कॉजी नो कॉजी फिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो फिर आफरीन कहूँ ए, समीर कहूँ सी. डू इट डू इट डू इट डू इट. हेगला आंसर दियो आंसर दियो आंसर दियो. से कहूँ देखा क्लाइमेटोलॉजी रो क्वेश्चन इट इज एसोसिएटेड विथ द नॉर्मल. कौन कही क्वेश्चन कौन. अच्छा एलिनो ये तो एबे पढ़ेली बा एलिनो आ तुम कर दो आ कौन अच्छे. आंसर देखी दियनी रे. देखनी देखनी आंसर देखनी है ना. तुमको सर देखे दौरान पुणी कहते देखनी ये एलिनो ऊपर. राइट, दिस इज फॉर एलिनो. ए लिटिल लेजेंड कहाँ से आ गया भाई, बहुत दिन के बाद आ गए शायद और फर्स्ट टाइम यू आर हियर. एलिनो एसोसिएटेड विद द abnormal warming of sea surface in the central and eastern Pacific. एबे देखेली एलिनो रो मीनिंग कोन. इफ this coast warm water है that means this is the sign of एलिनो. राइट. वाकर सर्कुलेशन कहाँ वीकेंड हे केते थर पढ़ाई छी. हां हबनी वाकर सर्कुलेशन कौन वीक हम. वाकर सर्कुलेशन is having two phase, positive phase and negative phase. The negative phase is associated with the El Nino and the positive phase is associated with La Nina. And El Nino जेतले हबो कोन हबो upwelling suppresses और जेतले La Nina हबो upwelling will be active. एटा कोन हबो एक्टिव हे जिवो. काहे कि के बुझाइबो मते के बुझाइबो ए यार मीनिंग के मते बुझाइ देबो देखिबा. एनीवन who can make me understood this one. ए जो लिखाई छी सप्रेस हबो कि एतेबेले एक्टिव हबो ये सब बुझी पारुचो ना खाली अंदाज.
बुझा पड़ुची केमिति देख एलिनो मीन्स व्हाट जेतले तमरे आगे लालिना कंडीशन बुझ आगे लालिना कंडीशन दिस इज साउथ अमेरिका दिस वुड बी योर ऑस्ट्रेलिया एबडे ऑस्ट्रेलिया व्हेन एलिनो लालिना कंडीशन अर्थात कोन दिस साइड विल हैव वार्म वाटर लालिना कंडीशन मीन्स कोन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन विल हैव वार्म वाटर एंड दिस रीजन विल बी कोल्ड वाटर एडी कोन रहबो तमरो cold water that means this is cold means what high pressure and the warm means low pressure that means the wind will flow what high to low and that is why the upwelling will be here एटी कोन हबो upwelling but जेतले ये एपडको आसी जिवो जाको हम को oscillation then the upwelling will be stop or the suppress or it will be suppress मु बिल्कुल एक्सप्लेन कर देली in India El Nino years are generally linked with the above normal rainfall ना above normal केमती हबो El Nino तो सबले कहै छै rainfall कम हबो बोली लालिना रे हबो बोली चलो फिर नेक्स्ट बुझा पड़ुची समस्तों को हाँ करेक्ट एवरीवन देखो वर्ष सारा जदी एतिकी एमसीक्यू कर दबो ना दैट इज यू आर मोर देन सफिशिएंट to clear this exam not clear चलो चलो देखो देखो ओशन करंट मैच करो 1000 थर 1000 थर कहै छी जदी भूल हबो आ पैटर्न नहीं आ पई ए कोची शत्रुजीत कोची ये देखिबा कोन कहै क्रोशियो करंट कैनारी करंट एगुलस करंट देखिबा गोटे अछि क्रोशियो गोटे अछि ओयासियो कैनारी करंट अछि कोल्ड करंट एट लिखा अछि साउथ अटलांटिक कोन लिखा अछि साउथ अटलांटिक ताले साउथ अटलांटिक तो हबनी ये कोठी हबो नॉर्थ अटलांटिक कोठी देखा जाए अफ्रीका जदी मु फटाफट अफ्रीका मैप ड्रा करके तुमको देखेबी दिस वुड बी योर अफ्रीका and here is your canary cold current एठी कोन देखा जाए canary cold current ये होची तमरो equator this is equator that means this is not south this is what in the north रे देखा जाए and that is why this is wrong so two got wrong one will be answer yes one will be answer जापान रे कोन देखा जाए क्रोशियो करंट इट्स अ वार्म करंट ओयासियो टा कोन हेथाय कौन था तुमरो ओया सीओ इससे कोल्ड वन ये कौन कोल्ड थाए मने पड़ुचे ना मने पड़ुनी एवरीवन आगुलास करंट कोठी देखा जाए एठी देखा जाए आगुलास करंट हियर इज व्हाट आगुलास बेसिन एंड आगुलास करंट कोठी देखा जाए इट वुड बी व्हाट वार्म करंट ए कोठी देखा जाए देखो हियर आगुलास बेसिन एटा मध्ये रही छि तमरो आगुलास बेसिन साउथ अफ्रीका रे देखा जाए डन एवरीवन चले फिर ये ही गला ताले देन आसबो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन ड्रिवन बाय व्हाट अरे बाकी मन को बुझा पड़ुची ये तमे कुआडे गलो जो हमर लिटिल लेजेंड को तुम भी को मोस्ट वेलकम टू द सेशन नेक्स्ट आंसर को बाकी समझते को मोस्ट वेलकम टू द सेशन मु कहै छी एवरीवन but the session will be intense and it would be not normal it would be difficult but you have to tolerate thermocline circulation मु कहै छी there would be thermocline gradient ये जदी तमे देखिबो the thermocline gradient will be happens like this thermocline जोटा थाय हमरो 200 to 500 मीटर थाय वाटर जदी हम कहबा 200 to 500 मीटर this is known as the thermocline zone गोटे थाय तमरो सरफेस वाटर गोटे ला thermocline and this would be your bottom water एटा कोन रहइबो तमरो bottom water तो साधारणतः हमें ओशन रो वाटर को तीन भाग रे भाग करि थाउ के गोटे ला टॉप वाटर गोटे ला एटा ला thermocline this is your thermocline एटा जो लिखाइ छै ना एटा होछि thermocline zone केते 200 to 500 मीटर आउ एटा जो एटा ला तमरो bottom water this is your what bottom water तनो ओशन को हमें तीन भाग रे भाग करथौ thermocline circulation would be because of the salinity and temperature so answer would be what salinity and temperature yes
and the next question comes, the global, that is conveyor belt boli taku kuhaje. This is very important, global conveyor belt. The next questions, इंडियन ओशन डाइपोल रो अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव देखो ये क्वेश्चन मु देखिबिनी तमने आंसर कुओ मु देखिबिनी ये तमन को पढ़ा हिची देखो क्वेश्चन जदी आसुनी मु साइड ही जाउची देखि देई परियो समस्ते द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म वाटर in the western Indian Ocean near the South African, cooler water Indonesia. A positive Indian Ocean dipole generally strengthen the Indian monsoon. Indian Ocean dipole is independent of El Nino and has no teleconnection. चलो फिर फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर एक होची अफरीन, सस्मिता, शत्रुजित, देखो प्रथम कथा क्लाइमेट गोटे एमिति सिस्टम, क्लाइमेट इज ए सिस्टम, इज ए व्हाट, ये कौन गोटे सिस्टम अनुसार काम करे जेमती आम बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज एक्ट एज ए सिस्टम, आमर जेते ग्लैंड्स अच्छी जेते हार्मोन्स अच्छी ये समस्त गोटे काम फंक्शन सब मिसिकी गोटे काम करुच्ची, सेमती क्लाइमेट मध्य गोटे सिस्टम दैट एक्ट्स एज ए टुगेदर, दैट एक्ट्स एज ए टुगेदर, दैट इज व्हाई वी कांट से दिस इज नो, आकु नो कहि परिबा नाही, इट्स ए सिस्टम works together, ये कौन together काम करे, so no it will have teleconnection and that is why this two is correct, so A is correct answer. climate कौन कहली, climate acts as a system, जेमती आम बॉडी रो तमे कहबो गोटे ऑर्गन इंडिपेंडेंटली किछि काम करूनी, ये काम करले से कहूची के बुझि परतने सेमिति, that is why it will have complex. Fifth number, India launches समुद्रयान मिशन as the part of deep ocean mission. आकु जदि किए कहि देबो देखिबा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आ पई आमे गोटे वर्ड भी यूज करूचे, जेमती आमे कहूचे एस्ट्रोनॉट, सेमिति एमान आमे कोन कहूचे एस्ट्रोनॉट कहूचे, ताले एमान को जो माने डीप ओशन को जाउची एमान को कोन कहवा जो एक्वानॉट, कोन कहवा जे aquanaut, what they called aquanaut, this is very important, they are called as what, aquanaut. They would be called as what, aquanaut, right, this is very important. Matsya 6000 rahichi, it focuses only on ocean biodiversity not minerals, no big B is wrong, B would be wrong, right. देखो ये कोची it aims on humans ए जाई जीवो ठीक अछि, focuses only ocean biodiversity ना, तो B को cancel कर दियो. The mission led by the ISRO in collaboration with the Indian Navy, it is the first attempt to develop the nuclear power submarines, no this is also wrong, so that would be A would be the only answer, right, A would be only answer. एक आसु तो करूचे हमें एथरे सबु जिंस रहबो, ए जो तमरो रहिছে ना एथरे फोकसेस, एथरे ओशन रो टेम्परेचर, ओशन रो बायोडायवर्सिटी, ओशन रो मैपिंग, कोठी मिनरल्स मिलुची, ओशन रो कंपोजिशन, एवरीथिंग विल बी देयर, सबु जाक रहबो तमर. एंड एथरे आउ कोन रहबो देखो सुमधुरान, ए कोन अछि मस्य 6000 सबमराइल्स हम करबा, पॉलीमेटालिक नोडुल्स एंड डीप सी बायोडायवर्सिटी. समझ में आया सबको, हाँ एवरीवन. aquanaut मन रहिला तो aquanaut जो कहली मु, aquanaut काहकु कहवा जे, क्वेश्चन जदि पचारो कहि परिबो तो aquanaut, करेक्ट. चलो नेक्स्ट, which of the following seas are considered as the marginal sea of Indian Ocean? पॉलीमेटालिक नोडुल बहुत बढ़िया, जोटा लिटिल कहूछ तमे लिटिल लेजेंड, पॉलीमेटालिक नोडुल इंडिया पई 75,000 स्क्वायर किलोमीटर in the middle of central of Indian Ocean is been allocated by International Seabed Authority Jamaica for the exploration of the polymetallic nodules, including the thermal hydrothermal vents in the Indian Ocean. Chalo, which of the following seas are marginal sea of the Indian Ocean? Andaman Sea, Mozambique Channel, Red Sea, Timor Sea. देखिबा for the prelims, okay.
सस्मिता कहूँ सर डेट आसीगला टिके कर दियंतु देखा हाँ all are saying D ओके टिमोर सी कोठी अछि ऑस्ट्रेलिया पाखरे अछि कोठी अछि ऑस्ट्रेलिया पाखरे फटाफट जदि मु मैप करी देखै देबी फटाफट जदि मु मैप करके देखेबी तुमको एटा होची इंडिया देखो फटाफट मैप केमती करा जाए ये रहला इंडिया ये होची अफ्रीका दिस इज अफ्रीका हियर वुड बी योर व्हाट ये रेड सी हेजिवो दैट मींस ये बा तुम गल्फ ऑफ पर्शियन एटा 1 गल्फ ऑफ पर्शियन 2 रेड सी गल्फ ऑफ अडेन अरेबियन सी एटी रहबो तुमर मोजाम्बिक चैनल हियर वुड बी मोजाम्बिक चैनल एटी रहबो मोजाम्बिक चैनल एंड रेड सी इज हियर रेड सी हेगिला टिमोर सी कोठी देखा जिवो लेट्स से हियर वुड बी योर इंडोनेशिया जावा दिस इज टिमोर सी तो ये तुमको कोठी देखा जिवो हियर वुड बी टिमोर सी राइट ताले जदि मु कहबी दिस वन दिस वन आ गोटे कोटा कहि से अंडमान सी वुड बी हियर हे गला एबे आराम से कर परिबो समस्ते करेक्ट टिमोर सी एठी किए किए अछि मु कहितली बोंडा सी आराफुरा सी मु कोन कहितली सुलू सी सेलिबित सी बोंडा सी आराफुरा सी टिमोर सी जाभा सी कोरल सी केते सी पढ़ै छी हां केते सी नबो तमे एसो पढ़ाई नी मैपिंग रे करै छी व्हाइट सी ब्लैक सी येलो सी कारा सी चुचकीप सी केते सी अछि आराफुरा सी हैं मैपिंग पढ़िबो खत्म हे जो सब चलो फिर नेक्स्ट which of the following features is are correct associated with mid oceanic ridge is a transform fault hydrothermal vents black smokers volcanic islands देखो 7 देखो ये टे कंट्रोवर्शियल कोन करा जिवो ये क्वेश्चन तो एमिति क्वेश्चन देछि आंसर मते भी टेंशन में पकाई देउछो किए कहलानी डी कहलानी समझते 7D हां अच्छा रुहो ये तुमरो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दिस इज हाउ तमने कोन कहउछो एटा कोन कहछि मिड ओशियनिक रीच कहछि ना मिड ओशियनिक रीच केमती हेइ थाए this would be there from here plates are moving into eta kon divergent boundary so this would be divergent boundary this would be what both plates are moving opposite direction because of what thermal convection current eta reach ta tomoro rahibo tale ethi te transform fault likhai chi ha eta kon hoibo divergent hei jibo तो ये ट्रांसफॉर्म लिखाई छी केमती हबो मिड ओशियनिक रीच ट्रांसफॉर्म केमती हबो इट वुड बी डाइवर्जेंट तो वन गॉट कैंसल ये बुझा पड़ुचे ना बुझा पड़ो मो कहता है मिड ओशियनिक रीच केमती हबो तो डाइवर्जेंट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री केमती हबो मते को नाउ हाइड्रोथर्मल वेंट ये करेक्ट वॉल्कानिक आइलैंड हेई पारे न भी हेई पारे देखो वॉल्कानिक आइलैंड साधारणते एठी हुए नाही वॉल्कानिक आइलैंड को हमें नहीं भी पारिबा तो 2 3 तमे जदी प्रोबेबल आंसर होबो तमरो 2 3 प्रोबेबल आंसर कोन होबो 2 3 आउ किछि हेई परिबनी बट देखो साधारणतः मिड ओशियनिक रीज रे वॉल्कानिक आइलैंड हुए नाही एटा भी मन रखि थाओ किंतु आउ किछि हेई परिबनी आंसर डी देछि बट दिस इज रॉन्ग आंसर दिस इज व्हाट रॉन्ग आंसर এটা রং आंसर हां छाड़ो चलो नेक्स्ट करेंट अफेयर देखो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम में पढ़ी ऑलरेडी डन चलो फिर
तो सेशन खत्म। हाँ तो यहाँ टिके आंसरटा गलत अच्छी, यहाँ बाकी आउ सब ठीक अच्छे, यहाँ टिके गलत अच्छी कहीं वोल्केनिक आइलैंड ये कहीं हो पारे किए कह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देख एक मिनट जदि तुम कहो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हम लेट से एमती अच्छी ताले किछि पार्टा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो पारे भी तो बहुत रेयर ना both the plates are moving right like this देखो ये volcanic island कही कहना ये तुम फिजर टाइप ऑफ एरप्शन हम जो एरप्शन टा कौन हम फिजर टाइप ऑफ एरप्शन हम फिजर मीन्स व्हाट इट्स ए लिक्विड तो जिते लिक्विड हो तो साधारणतः तुम ये आइलैंड फॉर्मेशन केमती हो मत कह अनलेस अंटिल जदि तुम मैफिक न हो फेल्सिक जहाँ आम कौन कह फेल्सिक जदि लाभाटा फेल्सिक न हो वोल्केनिक आइलैंड तो फॉर्मेशन हो पार नहीं बट ये जो मिड ओशियनिक रिज रे तुम मैफिक रहा कौन रहा मैफिक जिते तुम लाभाटा आसो से कौन रहा मैफिक कि नहीं मत कहती जो ये कह तुम ना कौन गोटे मिनट एक मिनट मत टिके टाइम दियो गुड इवनिंग बीरबल ये जो क्वाड गलो तुम कमेंट करथिला कैंसिल कर ना कौन तुम नाटा कौन कह शत्रुजी कन्फ्यूजन्स नहीं सर ना बुझी पारे कौन है मुझे भूल पढ़ी ना कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विथ मिड ओशियनिक रिज ऑप्शन कौन कही से ऑप्शन तो किसी से कहनी खाली ये कही ठीक अच्छे किसी गलत नहीं प्लस देख आर तुम आर जदि मुझे डिस्कस करी साधारणतः मिड ओशियनिक रिज रे जो वोल्कानोटा होता है सेटा मैफिक होता है कौन होता है मैफिक मैफिक अर्थात मोर फिजर मीन्स व्हाट इट वुड बी मोर फिजर टाइप एंड फिजर टाइप मीन्स आइलैंड फॉर्मेशन हम ही नहीं आइलैंड फॉर्मेशन मैफिक लाभा दरकार कौन दरकार मैफिक लाभा इज रिक्वायर्ड राइट तेणु ये छाड़ कहीं डिबेट आ करूच चंद्रशेखर बराल कहूँ सर मेसा बुट which are volcanic island also present in mid ocean ridge okay देखिए हैला so this things is for the today तो आज सेशन को एठी हम रखिबा and thank you everyone for the cooperations and daily support so keep and stay in always है ना आउ मु कहि वेस मेंटर कौन चैनल वेस मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवो all the notifications you will get here okay thank you everyone and good night to all have a good day good night to all